Yeah. Good evening, everyone. There's a video and audio clear. Please confirm once. Is the video and audio clear? Sonam, Chaneshwa, SS. Everyone, please confirm the video and audio once. Important update है before we start the class. आपको approximately 11 hours का recording है up to Maxwell equations. सब लोग वहां तक ही पढ़ लो. आज लास्ट सेशन होगा and on Friday 8 p.m. we'll have one more session, doubt clearing session. So तब तक सारे टॉपिक पढ़ के रखो. फ्राइडे के दिन लास्ट सेशन होगा एंड पहले 11 आवर्स 10 आवर 54 मिनट्स रिकॉर्डिंग है और 10 आवर 54 मिनट रिकॉर्डिंग आप पढ़ लो. इज इट क्लियर एवरीवन? सोनम, and others, is that clear? Yes. So myself, I'm JC Reddy, having 14 plus years of teaching experience in teaching, guiding, and mentoring students preparing for GATE, EST, and other competitive exams. Subject of expertise EMFT and communications. We'll move on to Poisson's and Laplace equation. Poisson's equation for electric field. Del square V is equal to minus rho V by epsilon naught. पॉइजॉन्स इक्वेशन में अगर आप चार्ज को जीरो करेंगे, यहां पे चार्ज कितना है रो वी, इसको जीरो करेंगे तो आपको लैपलेस इक्वेशन आएगा. पॉइजॉन्स इक्वेशन में स्पेशल कंडीशन जो है वो लैपलेस है. सो वी बाय मेकिंग रो वी जीरो, डेल स्क्वायर वी इज इक्वल टू जीरो. दिस इज लैपलेस इक्वेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड. Yeah. Biswajit, till lecture 14 we have to watch all of it, right? And what that will wrap up, and with that we'll wrap up EMF. Yes, yes. Correct, Biswajit, correct. सही है. And for magnetic field, del square A is equal to minus mu naught J. This is Poisson's equation. इसमें करंट को जीरो करने पे, करंट यानी सोर्स को जीरो करने पे you'll get Laplace equation. Del square A is equal to zero. So these are Poisson's and Laplace equations for electric and magnetic fields. इस पे एक प्रॉब्लम करवाएंगे. Given the potential function V is 10 into y to the power of 4 plus 20 x cube,
If epsilon naught is a permittivity of free space, find rho v at a point 2 comma 0. So everyone do it. The potential distribution function is given as v is 10 into y to the power of 4 plus 20 x cube. If epsilon naught is the permittivity of free space, what is the charge density? Rho v पूछ रहा है. According to Poisson's equation, del square v is equal to minus rho v by epsilon naught. Del square v करने पे क्या होगा? Del square v is nothing but the second derivative. Del square कैसे लिखेंगे आप? Dou square by dou x square plus dou square by dou y square plus dou square by dou z square of v potential function 10 into y to the power of 4 plus 20 x cube is equal to minus rho v by epsilon naught. Doing the derivative with respect to x, फर्स्ट डेरिवेटिव करने पे आएगा 20x क्यूब फर्स्ट डेरिवेटिव, 60x स्क्वायर सेकंड डेरिवेटिव 120x प्लस 10 to the y to the power of 4 फर्स्ट डेरिवेटिव 40y क्यूब सेकंड डेरिवेटिव 120y स्क्वायर. यहाँ पे x is 2 y is 0, y 0 बना दो, y 0 सब्स्टिट्यूट करो, 120x is minus rho v by epsilon naught, x is 2, 240 is equal to minus rho v by epsilon naught, rho v minus 240 epsilon naught. Yeah, Nidhi, correct. Yes, Nidhi, correct. Is that clear? If v is equal to potential function दिया सो है, v is equal to sin hyperbolic x cos ky e power pz is a solution of Laplace equation. Find value of k is a solution of Laplace equation बोल रहा है. Is a solution of Laplace equation means it must satisfy del square v is equal to 0. Del square v is dou square by dou x square plus dou square by dou y square plus dou square by dou z square of v sin hyperbolic x cos ky e power pz is equal to 0. सॉल्व कीजिए सब लोग. sin hyperbolic x cos ky e power pz फर्स्ट डेरिवेटिव करने पे sin hyperbolic x डेरिवेटिव cos hyperbolic x cos ky e power pz कांस्टेंट, ये फर्स्ट डेरिवेटिव. सेकंड डेरिवेटिव करने में cos hyperbolic x डेरिवेटिव sin hyperbolic x cos ky e power pz जो है वही आएगा अगेन. सो दिस इज इक्वल टू sin hyperbolic x cos ky e power pz plus derivative with respect to y, first derivative with respect to y, sin hyperbolic x derivative of cos ky minus k times of sin ky e power pz, ये फर्स्ट डेरिवेटिव है. सेकंड डेरिवेटिव बनाओ
Derivative of sin ky, k into cos ky minus k square times sin hyperbolic x cos ky e power pz. तो क्या आएगा? माइनस k square times sin hyperbolic x cos ky e power pz. डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू z करो. फर्स्ट डेरिवेटिव sin hyperbolic x cos ky e power pz into p. Second derivative p square times of sin hyperbolic x cos ky e power pz. So plus p square times of sin hyperbolic x cos ky e power pz is equal to 0. This 1 minus k square plus p square times of sin hyperbolic x cos ky e power pz is equal to 0. 1 minus k square plus p square is equal to 0. K square is 1 plus p square. K is under root of 1 plus p square. आंसर क्या है? Option B is answer. Is it clear? Everyone, is it clear? Next, work done and energy density. Work done in electric field is given by 1 by 2 volume integral d dot e dv, 1 by 2 volume integral d is epsilon naught e, epsilon naught e square dv, 1 by 2 volume integral d square by epsilon naught dv. Energy density is derivative of work done. आप इसका डेरिवेटिव करेंगे. वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ dv is v, d by dv of v is 1. 1 by 2 d dot e, 1 by 2 epsilon naught d square by 2 epsilon naught. अगर ये वर्क डन है, इसमें छोटा हिस्सा जो है ना वो एनर्जी डेंसिटी है. सिंबल भी ये कैपिटल होगा, ये स्मॉल होगा. इज इट क्लियर? This is for electric field. Magnetic field, work done in magnetic field Wm is 1 by 2 volume integral b dot h dv, 1 by 2 volume integral mu naught h square dv, 1 by 2 volume integral b square by mu naught dv. Energy density, small w capital M, 1 by 2 b dot h, 1 by 2 mu naught h square, b square by 2 mu naught. This is work done and energy density. Everyone try to solve this. A problem solve करने को कोशिश करो. An electron q1 is moving in free space with a velocity 10 power 5 meter per second
towards one more, this is moving, a move हो रहा है toward one more electron Q2 which is stationary. The closest distance that the moving electron gets to the stationary electron before the repulsive force diverts its path is dash into 10 power minus 8 meter. यहाँ पे क्या दिया है? एक स्टेशनरी है, एक चार्ज स्टेशनरी है, एक चार्ज मूविंग है. दिस इज इक्विलिब्रियम कंडीशन. कभी ऐसा दिया तो ये इक्विलिब्रियम कंडीशन है. According to equilibrium condition, potential energy is equal to kinetic energy. QV is half mv square. Q is charge on the electron. Let it be Q1. This is V2. Q1. V2 is Q2 by 4 pi epsilon naught R half mv square. This implies R is 2 Q1 Q2 4 pi epsilon naught mv square. It's 2 into minus 1.6019 into 10 power minus 19 into Q2 is also same whole square 1 by 4 pi epsilon naught 9 into 10 power 9. M mass of electron 9.11 into 10 power minus 31 kg. Velocity 10 power 5 whole square. सॉल्व कीजिए सब लोग. R is 2 into 1.6019 whole square into 9 into 10 power minus 38 into 10 power 9 9.11 10 power minus 31 into 10 power 10 10 power minus 21. ये होगा R is 18 into 1.6019 whole square 10 power minus 29 by 9.11 10 power minus 21. ये सॉल्व कीजिए 5.058 आएगा. 10 power minus 29 into 10 power 21 is 10 power minus 8 meter. ये ऑलरेडी दिया है क्वेश्चन में. सो आंसर इज 5.058. निधि वेरी गुड, करेक्ट. करेक्ट. सही है. नेक्स्ट, ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. ये क्वेश्चन सॉल्व कीजिए. एन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल field is produced in air by point charges 1 microcoulomb and 4 microcoulomb located at minus 2 comma 1 comma 5 and 1 comma 3 comma minus 1. Find the energy stored in the field. Please, can anyone tell me what is the formula? Formula क्या है energy stored का? Energy stored formula, anyone? Energy stored formula.
यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करना है। मेरा डाउट ये है, एनर्जी स्टोर्ड, हाँ निधि, हाफ क्यूबी, वाई नॉट क्यूबी? क्यूबी कब यूज करना निधि? हाफ क्यूबी कब यूज करना? क्यूबी कब यूज करना? हाफ क्यूबी कब यूज करना? क्वेश्चन में आपको पूछा है फाइंड वर्क डन, तो वर्क डन का फॉर्मूला है Q इंटू वी। समझ में आ रहा? अगर एनर्जी स्टोर्ड पूछा है, एनर्जी स्टोर्ड इज हाफ क्यूबी। क्यों ऐसा? बिकॉज वर्क डन इज एनर्जी स्टोर्ड प्लस एनर्जी डिसिपेटेड। एनर्जी स्टोर्ड इज हाफ क्यूबी, एनर्जी डिसिपेटेड इज हाफ क्यूबी। मिला है तो आपको वर्क डन आएगा। ये लॉजिक है। यहां पे एनर्जी स्टोर्ड पूछ रहा है तो क्या यूज करना है? 1/2 क्यूवी। इज इट क्लियर? This 1/2 Q is Q1, V is Q1, V2, Q1, V2 is Q2 by 4 pi epsilon naught R. Work done is 1/2 Q1, first charge, 1 microcoulomb, 10 power minus 6, second charge, 4 microcoulomb, 4 into 10 power minus 6, 1 by 4 pi epsilon naught, 9 into 10 power 9 by R. x1, y1, z1 कितना दिया? फर्स्ट पॉइंट -2, 1, 5। x2, y2, z2 कितना दिया? 1, 3, -1। वेक्टर आर x2 minus x1 ax, 1 minus of -2, 3ax plus 2ay minus 6az, mod of r under root of 9 plus 4 plus 36, under root 49, 7। सो ये वैल्यू कितना आएगा आपको? 7 आएगा। इज इट क्लियर? सो वर्क डन 9 into 4, 36 by 2, 18 into 10 power minus 3 by 7. This is 2.57 10 power minus 3 मिली जूल। अगर आप ये गलती से हाफ नहीं लिए तो 5.14 आएगा, इसलिए बहुत ध्यान से करना है। इज इट क्लियर? नेक्स्ट, W1 is the electrostatic energy stored in a system of 3 equal point charges arranged in a line with 0.5 meter. Arranged in a line with 0.5 meter. Work done is W1.
Clear है? If W2 is energy stored with 1 meter separation, with 1 meter separation, the energy stored is W2. Which one of the following is correct? Everyone please do it. Everyone please do it. W1 is Q into V1. W2 Q into V2. V1 Q by 4 pi epsilon naught R. V2, if R is 0.5 meter, 1 meter is 2R. Q by 4 pi epsilon naught 2R. So W1 is Q into Q by 4 pi epsilon naught R. W2 Q into Q by 4 pi epsilon naught R into 2. Is that clear? So W2 is, this is W1 by 2. W1 is 2 times of W2. W1 is 2 times of W2. Nidhi, correct. Option C is the answer. Very good. कोई doubt? Any doubts? W2 is W1 by 2. Yes, correct. Yes, correct. Very good. Next, boundary conditions. Detailed theory मैंने वीडियो में बताया. Please go through boundary conditions. 1 hour का लेक्चर था वो. तो बाउंड्री कंडीशंस क्या आया? पहले डाइलेक्ट्रिक बाउंड्री कंडीशंस. डाइलेक्ट्रिक बाउंड्री कंडीशंस क्या आएगा? व्हेन यू सॉल्व मैक्सवेल इक्वेशंस, मैक्सवेल इक्वेशन सॉल्व करने पे आएगा. क्या इक्वेशंस आए अपने को? फर्स्ट वन, tangential component of electric field intensity is continuous across the boundary of discontinuity. Tangential component change नहीं होगा. Second, dn2 minus dn1 is equal to rho s. Rho s is the surface charge density that is placed on the boundary. अगर ये 0 हुआ तो dn1 is equal to dn2. कब होगा? If and only if rho s is 0. एक कंडीशन सेटिस्फाई होने पर होगा, इसलिए इसको बोलते हैं कंडीशनली कंटिन्यूअस. ए हमेशा होगा अनकंडीशनली कंटिन्यूअस. ए कंडीशनली कंटिन्यूअस, ए अनकंडीशनली कंटिन्यूअस. थर्ड, ht2 minus ht1
is equal to K cross AN implies HT1 is equal to HT2 if and only if K is 0. K is surface current given in ampere per meter. Fourth, Bn1 is equal to Bn2. Normal component of magnetic flux density is continuous across the boundary of discontinuity. Unconditionally continuous. ये चार को मिला के boundary condition बोलते हैं. क्या है boundary condition? Tangential component of electric field is continuous across the boundary of discontinuity. पहला वाला, which is unconditionally continuous. Second, normal component of electric flux density is continuous across the boundary of discontinuity if and only if rho s is 0, where rho s is the surface charge density that is placed on the boundary. ये कंडीशन सेटिस्फाई होने पर ही कंटिन्यूस होगा, इसलिए इसको कंडीशनली कंटिन्यूस बोलते हैं. थर्ड, मैग्नेटिक फील्ड का tangential component of magnetic field intensity is continuous across the boundary of discontinuity if and only if K is 0, where K is the surface current placed on the boundary. और जब सरफेस करंट जो बाउंड्री पे है वो 0 होने पर ही एक कंडीशन सेटिस्फाई होगा. फोर्थ, नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी इज कंटिन्यूअस अक्रॉस द बाउंड्री ऑफ डिसकंटिन्यूटी. ये चार को डाइलेक्ट्रिक बाउंड्री कंडीशन बोलते हैं. नाउ अगर आप एक डाइलेक्ट्रिक निकाल के परफेक्ट कंडक्टर प्लेस किए तो क्या होगा? डाइलेक्ट्रिक एक को निकाल के परफेक्ट कंडक्टर बाउंड्री कंडीशंस. परफेक्ट कंडक्टर में क्या होगा? फील्ड वैल्यू 0 होगा. तो एक को निकाल दीजिए, फील्ड में 0 कर दीजिए, तो क्या होगा? ET1 ET2 नहीं है, अब एक ही फील्ड है, तो E tan एक को 0 कर दीजिए. E tan इज इक्वल टू 0. Tangential component of electric field intensity is 0 on the surface of perfect conductor. यहां पे D normal is equal to rho s. Normal component of electric flux density is equal to surface charge density on a surface of perfect conductor. यहां पे H tan is equal to K cross AN. यहां पे D normal is equal to 0. These four are dielectric perfect conductor boundary conditions. Detailedly I explained in the video. वीडियो में मैंने डिटेलली एक्सप्लेन किया. प्लीज गो थ्रू द वीडियो. ऐसा प्रॉब्लम आएगा एग्जाम में तो कैसे सॉल्व करना है? A medium is divided into two regions. Region 1 and region 2. X is equal to 0. There's a plane as shown in the figure below. Is a boundary. Electric field in region 1. फोर एक्स प्लस 3ay प्लस 5az वोल्ट पर मीटर. E2 पूछ रहा है. टेल मी प्लीज, एवरीवन सॉल्व एंड टेल मी आंसर क्या है. सुनेश्वर, विश्वजीत, निधि, SS, एवरीवन. Everyone solve it and let me know the answer. Everyone solve it and let me know the answer. इसमें नॉर्मल कंपोनेंट कैसा डिसाइड करना वो इंपॉर्टेंट है. एक बार देखिए सब लोग ध्यान से देखिए. इलेक्ट्रिक फील्ड 1 दिया है. क्या दिया है? 4x plus 3ay plus 5az. We know in any component there is tangential component and normal component. E1 is ET1 plus En1. अब इसमें tangential कितना है, नॉर्मल कितना है, पता कर लेना. Can anyone tell me नॉर्मल कैसा पता चलेगा? X is 0 बाउंड्री है, इसको नॉर्मल कैसा ड्रा करेंगे आप? ऐसा.
नहीं तो ऐसा। ये नॉर्मल कौन सा डायरेक्शन में है? ये नॉर्मल कौन सा डायरेक्शन में है? एग्जैक्टली एक्स डायरेक्शन में है। तो नॉर्मल कंपोनेंट कौन सा है? एक्स कंपोनेंट इज अ नॉर्मल कंपोनेंट। जो बचा है पूरा टेंजेंशियल है। तो नॉर्मल क्या होगा आपको? en1 4x, et1 क्या होगा? 3ay प्लस 5az। बाउंड्री कंडीशन क्या है? बाउंड्री कंडीशन क्या है? et1 इज इक्वल टू et2। तो ये क्या होगा आपको? et2। et2 कितना होगा? 3ay प्लस 5az। et2 आ गया। अब क्या आना? en2 आना। en2 कैसा आएगा? dn1 इज इक्वल टू dn2। dn1 क्या है? एप्सिलॉन 1 en1 इज इक्वल टू एप्सिलॉन 2 en2। एप्सिलॉन r1 en1 इज इक्वल टू एप्सिलॉन r2 en2। en2 क्या है? एप्सिलॉन r1 बाई एप्सिलॉन r2 इंटू en1। एप्सिलॉन r1 कितना दिया है? ये r1 है, r2 है। एप्सिलॉन r1 3, एप्सिलॉन r2 4 इंटू en1 कितना दिया है? 4x। 4 एंड 4 कैंसल। en2 कितना हुआ? 3x। so e2 कितना होगा? e2 is et2 plus en2। 3ax plus 3ay plus 5az volt per meter। yes, clear। is it clear? next one, a current sheet J is equal to 10 A by ampere per meter। J is 10 A by means क्या है? सरफेस करंट है। क्या दिया है? सरफेस करंट, करंट ऑन द सरफेस 10 A by ampere per meter। ये 10 AY ampere per meter दिया सो है। is on the dielectric interface x is equal to 0। epsilon r1 is 5, mu r1 is 1, region 1। epsilon r2 is 5, mu r2 is 2, region 2। magnetic field in region 1 3ax plus 30ay ampere per meter। h2 फाइंड आउट करना है। सब लोग कीजिए, एवरीवन डू इट। कैसा करना है? नॉर्मल कंपोनेंट क्या है यहाँ पे? व्हाट इज द नॉर्मल कंपोनेंट? व्हाट इज द नॉर्मल कंपोनेंट हियर? h1 is 3ax plus 30ay एम्पियर पर मीटर। इसमें नॉर्मल कंपोनेंट कैसा पता चलेगा? बाउंड्री बोलेगा आपको नॉर्मल कंपोनेंट क्या है। x इज 0 बाउंड्री है, तो x ग्रेटर देन 0, x लेस देन 0 डायरेक्शन में नॉर्मल है। x कंपोनेंट नॉर्मल है। hn1 कितना आ रहा है अभी? hn1 3ax, जो बचा है वो टेंजेंशियल है। hd1 30ay। वेरी गुड एसएस। बाउंड्री कंडीशन क्या है? hd2 माइनस ht1 is k cross an। ht2 is k cross an plus hd1। k सरफेस करंट 10 ay क्रॉस ax प्लस hd1 3ax।
AY cross AX minus AZ. So this is 3AX minus 10AZ. This is HT2. Normal component Bn1 is equal to Bn2. Mu1 Hn1 is equal to mu2 Hn2. Mu R1 Hn1. Mu R1 Hn1. Mu R1 1. Hn1 3x. Sorry. Yeah, correct. Sorry. क्या है HT1 आया ना 30AY 30AY आना चाहिए सही HT1 30AY प्लस 30AY तो ये क्या होगा 30AY सही या करेक्ट क्या होगा 30AY माइनस 10AZ चलो mu1 Hn1 1 into 3AX mu2 2 into Hn2 Hn2 1.5AX H2 होगा Hn2 प्लस Ht2 1.5AX plus 30AY minus 10AZ ampere per meter. क्लियर ये मॉडल 2 है जहां पे करंट डेंसिटी दिया सो है दिस इज परफेक्ट कंडक्टर ये फ्री स्पेस है बाउंड्री कंडीशन परफेक्ट कंडक्टर फ्री स्पेस H tan is equal to K cross AN. Region shown below contains perfect conducting material, half space and air. The surface current Ks on the surface of perfect conductor K is 2AX ampere per meter. The tangential component of field in the air just above the perfect conductor H tan चाहिए. We know H tan is K cross A and 2AX cross normal. Normal is given as AY. So H tan is 2AZ ampere per meter. Therefore, option D is answer. Any doubts? Yes. Yes, correct. Now, amount of refraction that takes place on the boundary. वीडियो में पढ़ा है ना क्या दिया फॉर्मूला tan alpha 1 by tan alpha 2 is equal to epsilon r1 by epsilon r2 or mu r1 by mu r2. सॉल्व कीजिए टू डायरेक्ट्रिक मीडिया with permittivity epsilon r1 is 3 epsilon r2 is root 3 is shown in the figure alpha 1 is 60 degrees find alpha 2 पूछ रहा कैसे करेंगे tan alpha 1 tan 60 by tan alpha 2 is equal to epsilon r1 3 by root 3 3 by root 3 is root 3 or simply root 3 by 1 tan 60 is root 3 ये दोनों मैच हुआ तो डिनोमिनेटर्स मस्ट मैच tan alpha 2 is 1 alpha 2 is 45 degrees आंसर कितना आएगा आंसर will be 45 degrees. Option B is the answer.
करंट थ्योरी में मैंने बताया वीडियो में, प्लीज गो टू द वीडियो. करंट I is equal to dq by dt, rate of change of charge. Current density, current per unit surface area. Take a small surface area, small current di. From this di is jds. I, surface integral of j dot ds, vector notation. This is for open surface. For a closed surface integral of j dot ds. Yeah, Nidhi, correct. Continuity equation. Continuity equation is from the property of conservative property of charge. Please go to the video. What is continuity equation? Del dot J is equal to minus dou rho V by dou T. It is also called continuity equation for currents. Ohm's law for field theory, J is equal to sigma E. All the derivation, जो भी derivation है मैंने वीडियो में बताया है. Please go to the video. Clear? For static, electric and magnetic fields in an inhomogeneous source-free medium, which of the following represent the correct form of two Maxwell equations? Maxwell equations for static fields लिखिए. For static fields, Maxwell equation लिखिए. From Gauss law, del dot D is equal to rho V. From conservative property of electric field, del cross E is equal to 0. From Ampere's law, del cross H is equal to J. From non-existence of magnetic monopole, del dot B is equal to 0. Now, source-free medium. Source-free medium equation क्या होगा? Del dot D is equal to 0 because rho V is 0. Del cross E is equal to 0. Del cross H is equal to 0. Del dot B is equal to 0. Inhomogeneous equation क्या होगा? Inhomogeneous, D is epsilon E. ये क्या होगा? Del dot E is not equal to 0. ऐसे ही del cross D is not equal to 0. ऐसे ही del cross B is not equal to 0. Inhomogeneous. Del dot H is not equal to 0. Check out the equation now. कौन सा करेक्ट है? Del dot E is 0. चेक करो. Del dot E is not equal to 0. ये नहीं है. Del dot E is 0. ये भी नहीं है. Del cross E is 0. Del cross E कहाँ है? 0. करेक्ट. Del cross B is 0. Del cross B not 0. ये भी है. Del cross E is 0. करेक्ट. Del dot B is 0. करेक्ट. So what's the answer? Option D is your answer. Yes, yes, correct. Good. Is that clear? Faraday's law. Derivation is given in the video. Del cross E is equal to minus dou B by dou T. Orientation of electric field depends on time varying magnetic field. This is from Faraday's law.
Inconsistency of Ampere's law. Del cross H is equal to J plus JD, where J is conduction current density sigma E. JD is displacement current density dou D by dou T. Again, the derivation is given in the video. Please go through the video. This summary of Maxwell equation for time varying fields. First equation, closed loop integral of d dot ds is equal to volume integral of rho v dv, integral form. Differential or point form. Del dot d is equal to rho v. Source, Gauss law for electric fields. Second, closed loop integral of E dot dl is equal to surface integral of minus dou b by dou t dot ds. Differential form, del cross E is equal to minus dou b by dou t. Faraday's law. Third, closed loop integral of H dot dl is equal to surface integral of J plus JD dot ds. Differential form, del cross H is equal to J plus JD. Where J is equal to sigma E, conduction current density. JD is dou D by dou T, displacement current density. Source, inconsistency of Ampere's law. Fourth, closed surface integral B dot ds is 0. Differential form, del dot B is equal to 0. Source, non-existence of magnetic monopole, or simply Gauss law for magnetic fields. This will complete Maxwell equation for time varying fields. Clear? Tell me what's the answer for this? Yeah. For time varying fields, del cross E minus dou B by dou T, del dot D rho V, del dot B 0. Del cross H J plus JD sigma E plus dou D by dou T. मैथ कीजिए सब लोग. Del cross E minus dou B by dou T, del dot D rho V, del dot B 0, del cross H sigma E plus dou D by dou T. Option D is answer. Next, a positive charge Q is placed at x is 0 between two infinite metal sheets. Placed at x is equal to D and x is equal to minus D respectively. The charge is at rest
A T is equal to 0. A T is 0. ये charge rest में है. When the voltage plus V is applied to plate at x is equal to minus D, and the voltage of minus V is applied to plate at x is equal to D, assume that the quantity of charge Q is very small, that it will not perturb or disturb the field setup by the metal plates. What is the time taken for the charge Q to reach the right plate is proportional to कितना टाइम पे यहां पे जाएगा पूछ रहा, कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना यहां से यहां तक, निधि कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना यहां से यहां तक, ए एक्सिस 0 पे है, ए एक्सिस डी पे है, यहां से यहां तक आने के लिए कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना, डी. वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस बाय टाइम. तो टाइम क्या होगा, डिस्टेंस बाय वेलोसिटी. अभी क्या बोल रहा है, डिस्टेंस ट्रेवल कितना है डी, वेलोसिटी नहीं पता, फाइंड आउट करना है. बट पहले ये चार्ज रेस्ट पे था, फिर मूव होना स्टार्ट हुआ, मींस इक्विलिब्रियम कंडीशन. इक्विलिब्रियम कंडीशन मींस पोटेंशियल एनर्जी QV is equal to kinetic energy half mv square. From this V square is 2QV by m. V अंडर रूट ऑफ 2QV by m. यहां पे V वेलोसिटी है, यहां पे V पोटेंशियल है, प्लीज याद रख लो. तो इससे क्या आएगा आपको, V वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ V पोटेंशियल. ये क्या होगा, T इज इक्वल टू डी बाई वी, और T इज प्रोपोर्शनल टू डी बाई अंडर रूट V. डी बाई अंडर रूट V कहां पे है निधि, डी और C. That's why it is not D but it is C. समझ में आया. फ्राइडे का क्लास में, फ्राइडे 8 PM का क्लास में we'll see capacitors and inductors and doubts will be solved. That will be our last session. Is that clear?